Hi friends, welcome back to my channel. So today we are going to renovate this table. This I took it from IKEA. It has been almost more than 1 year now. I could see that there are a few scratches came into this table. So I thought why not to renovate this. So to renovate this, today I am going to use few colors. One is white color and then few shades of blue and gold color and then brushes. So let's get started. I'll remove all the legs. I'm giving dark to light shade. So at the bottom you will be having a darker shade, then a little light, and at top you will be having a white shade. You can use sponge और brush. मैंने दोनों ट्राई किया था. पहले मैंने स्टार्ट किया था स्पॉन्ज से, तो पहले देखते हैं स्पॉन्ज का इफेक्ट कैसा लगता है. तो ये था स्पॉन्ज का इफेक्ट. अब चलो देखते हैं ब्रश का इफेक्ट. तो मैंने पूरे लेग्स को वापस से पेंट किया और ब्रश से स्ट्रोक्स करके वापस मर्ज किया. और यहाँ पे मैंने वाइट के 2 कोट्स किए हैं, डबल कोट फॉर द वाइट कलर. जब मैं टेबल पे ग्लू अप्लाई कर रही थी तो मैंने बहुत धीरे और आराम से ग्लू अप्लाई किया था, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत ही स्मूथली ग्लू अप्लाई हो रहा था और स्पॉन्ज बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रहा था ग्लू को. तो अगर और बहुत ही मज़े भी लिए मैंने. तो अगर आप भी मेरी तरह से स्लोली अगर आप ग्लू को अप्लाई करने वाले हो तो प्लीज़ फैन ऑफ
यहाँ मैंने गोल्ड कलर से सिर्फ हाईलाइट किया है। मैंने हर एक लीफ को या फिर हर एक फ्लावर को गोल्ड कलर से हाईलाइट नहीं किया है। मैंने कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ मुझे लगा सिर्फ मैंने वहीं पे हाईलाइट किया है। गोल्ड कलर के हाईलाइट देने की वजह से ये और भी 3D लुक अलग से दिख रहा था। माय टेबल इज रेडी। मैंने बहुत ही प्लेन और ब्लैक कलर की डल टेबल को बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा कलर देके बहुत ही ब्यूटीफुल टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे टेक्सचर पेपर यूज़ किया था और उसके ऊपर गोल्ड कलर का हाइलाइटर किया था। सिर्फ साइड और बॉर्डर में हाईलाइट किया था मोस्टली। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3D लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है और आपके पास जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस टेबल रेनोवेशन का आइडिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।